सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज शुक्रवार को हम लोगों की क्वालिटी एश्योरेंस की सीरीज में लेबोरेटरी सेटअप एंड मैनेजमेंट एक गंभीर विषय है जिसे एसएसआई को अवश्य फॉलो करना चाहिए। इस शास्त्र चर्चा में, और वो भी प्रैक्टिकल चर्चा में, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स ही होते हैं ज्यादा। मैं हिमांशु शेखर तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अंतरिक्ष कटारा जी का अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर सगीर जी का अभिनंदन करता हूँ। तीनों ही डॉक्टर्स का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मैं क्या कहूँ लेबोरेटरी के विषय में। एक अरमान बाकी रह गया है कि जैसे हम बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स लेबोरेटरी के ऊपर फोकस करते हैं, ऐसा ही ये जिस दिन एसएसआई में आ जाएगा उस दिन मेरे आयुर्वेद का वास्तव में भला हो जाएगा, ये मेरा मानना है। ज्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी को स्वागत भाषण एवं संक्षिप्त प्राकथन के लिए आमंत्रित। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक नई श्रृंखला को लेकर नए पायदान पहुंचे हैं, और विशेष रूप से लेबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर हम वर्तमान विश्व में अपने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की पहचान कराना चाहते हैं और धाक जमाना चाहते हैं, तो विशेष रूप से उन पैरामीटर्स के लिए लेबोरेटरी का वेल एस्टेब्लिश होना आवश्यक हो जाता है। जहां एक रिसर्चर के लिए तो R&D सेक्शन की बात आती ही अपनी ड्रग के असेसमेंट के लिए, वहीं दूसरी तरफ इच्छा होती है कि वो मैन्युफैक्चरर्स क्या भी उतनी वेल एस्टेब्लिश्ड हो। तो उस क्रम में बधारे हुए आज के हमारे सभी अतिथि वक्ताओं का हम बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं, जिसमें हमारे साथ में डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी साहब है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर अंतरिक्ष कटारा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमें विश्वास है हमारे मिस्टर राकेश जी भी, शर्मा जी भी जुड़ेंगे और उनका स्वागत है। और साथ में हमारे जो अब्दुल सगीर अहमद खान साहब भी जुड़ेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर पवन शर्मा जी भी निश्चित रूप से इस दिशा में इतने लंबे अनुभव को रखते हैं, वो भी अपना विशिष्ट वक्तव्य भी से हम लोगों को लाभान्वित कराएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये माना जाता है कभी फाइजर या कभी गफसिक और दूसरी जो अच्छी मॉडर्न मेडिसिन की जो लेक्चरर्स हैं, उनकी बड़ी कीमती R&D सेक्शन होता था। जितना ज्यादा वो R&D पे पैसा खर्च करते थे, ये माना जाता है उतनी ही क्वालिटी कंट्रोल के साथ में उनकी मेडिसिन निकलती है हमारे। ये जरूरी है आयुर्वेद भी उसी विधा को और आगे तक ले जाए, हालांकि बहुत आगे ले गए हैं। मैंने खुद टावर का सेक्शन जाके देखा है साहिबाबाद गाजियाबाद में, और भी यहाँ पतंजलि का भी देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के इनमें जो नॉर्म्स स्टैब्लिश किए गए हैं, उनको किस हद तक माना जाता है, हम मानते हैं कि बहुत कॉस्ट आती है, बहुत ही पेनस्टेकिंग, लेबर बेस्ड और क्वालिफिकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा कहानी है। लेकिन फिर भी हमें बड़े बड़े अच्छे रिसर्चर्स मिलते हैं इस फील्ड के, जो हमारे एम फार्मा PhD ये सब लोग मिलते हैं, तो इस दिशा में बहुत अच्छा निर्देश दे सकते हैं, एडवाइस करते हैं और कमान भी संभालते हैं। हमें पूरा विश्वास है हमारे कटार साहब यहाँ पर अपना काम देख ही रहे हैं। सुधांशु जी जो है, शेखर जी तो पता नहीं कितनों को और सिखा सकते हैं। एक बड़ी लंबी श्रृंखला है अनुभव की। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, इस विषय में मेरा को ज्यादा नहीं आता है, आप लोगों से सुनने का ही इच्छा है, इसलिए मैं पुनः एक बार करेंगे आज के अतिथियों को आमंत्रित करने की कृपा करें, जिससे कि आज के इस टॉपिक सिलसिले से जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो सके। नमस्कार। और प्रोफेसर पवन शर्मा। हरिओम। मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी। सभी को नमस्कार। हरिओम। और आज का विषय जो आपने रखा है, और पहले भी भूमिका में आपने भी कहा, अग्निहोत्री सर ने भी कहा कि QA और QC प्रोडक्शन तो दिखता ही है कि दवा बन के बाहर आ गई, आपके हाथ में आ गई, मार्केट में आ गई, वो सबको दिखता है। पर उसके पीछे जो QA और QC का हाथ है वो किसी को नहीं दिखता। वो है भी या नहीं भी है, किसी को नहीं पता। जो डॉक्यूमेंट्स पेपर बनने चाहिए प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए, वो आज की
हम कहते हैं कि 8,000 समथिंग GMP फार्मेसीज ऑल ओवर इंडिया हैं, पर उसमें से 10% भी इन लोगों, किन चीज़ों को, इन फॉर्मेलिटीज को हम कह लें, रेगुलेटरी बॉडीज को कह लें, जो हमारे ड्रग ऑफिसर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कहीं प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। फिर भी कोशिश रहती है कि जो भी जहाँ है, बिकॉज अभी इन्होंने अग्नि सर ने नाम डाबर का लिया, फिर पतंजलि का लिया, उससे मुल्तानी भी है, हाँ अंतरिक्ष वहां पर है। हाँ, तो लैब सेटअप करने में जब हम लोग थे वहां पर, तो NABL एक्रेडिटेड लैब की बात होती थी, और धीरे धीरे करते करते वो सेटअप हुआ। आज फूड लैब भी है और WHO GMP प्लांट है मुल्तानी का। तो जो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो GMP तो मिल जाता है, काम हो ही रहा था, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक WHO GMP COPP के लिए होना चाहिए, फॉर द प्रोडक्शन, क्वालिटी इंश्योरेंस, QC, वो सभी चीजें आज की तारीख में वहां पर हैं। और इसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि जितने भी फार्मेसीज हैं, अ, शर्मा जी भी कह रहे थे कि जिस दिन ये लागू कर हो जाएगा तो आयुर्वेद के लिए अच्छा हो जाएगा, और जरूरी भी है, बिकॉज R&D बंद कमरे में होता है, लिटरेरी वर्क पर होता है, प्रैक्टिकल वर्क में कितना हो पाता है वो कह नहीं सकते। तो लेबोरेटरी सेटअप इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिटी इंश्योरेंस आज का जो विषय है। अब क्वालिटी इंश्योरेंस की हम बात करें, तो क्वालिटी इंश्योरेंस इज एन सिस्टमिक प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग वेदर अ प्रोडक्ट मीट्स अ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट हम बनाते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इस पे ये पास होना चाहिए। A quality assurance system is meant to increase customer confidence and the company's credibility while also improving work process and efficiency, and it's enabled a company to better compete with the others. कंपटीशन का जमाना है, तो जब तक आप compete नहीं करेंगे उस चीज में, आपका प्रोडक्ट बेस्ट टू बेस्ट डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। जो एक बैच का प्रोडक्ट है, जो टेस्ट है, जो कलर है, जो सभी चीजें हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, वो सेम होना चाहिए आपका, तो कहीं भी डिफरेंशिएट ना हो। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट पे भी, कंज्यूमर पे भी उसका अच्छा प्रभाव होता है। आज आज को प्रोडक्ट लेके आप आ रहे हैं, उसका टेस्ट कुछ और है, कल दूसरा उसी नाम का आप वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसका टेस्ट अलग है, कलर अलग है, तो वो लगता है कि कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। Quality insurance means the sum total of the organized arrangement made with the objective of ensuring that the products are of the quality required for their intended use। जिस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए हम बना रहे हैं, उन चीजों पे वो खरा उतरे। गोल क्या है? द गोल ऑफ द क्वालिटी इंश्योरेंस इज टू सिस्टमेटिकली मॉनिटर एंड इवोलेट द क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स। तो जो भी चीजें आप हो रही हैं उसको सिस्टमेटिकली मॉनिटर करना, जो SOPs हैं उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना, टेस्टिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना, और जो आपका रिजल्ट है, जो आप चाहते हैं, वहां तक पहुंचना। कंपोनेंट ऑफ QA की हम बात करेंगे, तो क्वालिटी इंश्योरेंस इन द लेबोरेटरी इन्वॉल्व सेवरल की कंपोनेंट इंक्लूडिंग रोबस्ट SOPs। अभी SOP का मैंने नाम लिया, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है, वो हर प्रोसेस पे, कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसको एक SOP होती है, और यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली दैट SOP। आदमी आता जाता रहता है, स्टाफ आता जाता रहता है, पर अगर SOP बन गई किसी चीज की, तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम होगी तो पकड़ा जाएगा। अगर SOP में लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस के बाद उसका कलर हरा होता है या नीला होता है, या टेम्परेचर उसका इतना होता है, तो ये चीजें चेंजेस होंगी, और वो नहीं हो रहा, तो आप वहीं के वहीं उस चीज को स्टॉप करके आपकी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, क्या हुई, उसको देख सकते हैं आप। कैलिब्रेटेड एंड वैलिडेटेड इक्विपमेंट्स। अब जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, वो कैलिब्रेटेड वैलिडेटेड इक्विपमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक आप प्रॉपर रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कैलिब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं है और वैलिडेट नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ की जहां तक बात करें, तो जो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है स्टाफ को, एजुकेशन, चाहे वो BMS डॉक्टर हो, MD हो, B फार्मा, M फार्मा लोग करके आते हों, पर जिस माहौल में, जिस ढंग से उनको काम करना चाहिए, वो प्रॉपर ट्रेनिंग जब तक उनको नहीं मिलेगी, तब तक वो चीजें नहीं हो पाती हैं। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ये भी बहुत आवश्यक है। रिगरस डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं और उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट, वो सारा का सारा आपका होना चाहिए।
और रिकॉर्ड कीपिंग जब भी आपसे रिकॉर्ड मांगा जाए किसी चीज का, किसी बैच का रिकॉर्ड, किसी टेस्टिंग प्रोटोकॉल का रिकॉर्ड, किसी टेस्टिंग का इन प्रोसेस या फिनिश गुड का, तो वो आपके पास होना चाहिए। रेगुलर इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट, ये आपका अभी एक वर्ड आता है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट आप करेंगे तो एक्सटर्नल जब होगा तो आपको ज्यादा तकलीफ दे नहीं रहेगा। क्यों? आपने जो पॉइंट्स ऑडिट्स के हैं वो करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, वो चीजें प्रॉपर वे में आपको मिलेंगी। और क्यूए की हम बात करते हैं तो मेरा एक मानना होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, क्यूए जो है, क्यूए पर्सन जो हेड होता है, जो और भी जो भी उनके नीचे काम कर रहे हैं, दे आर द इम्प्लीमेंटेशन पर्सन्स। जो भी चीजें वहां बनी हुई हैं, एसओपीज बनी हुई हैं, सिस्टम बना हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट कराना क्यूए का काम है। तो हम लोग कहते हैं जो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है ना, वो क्यूए का आदमी है। उसको हर चीज को डिसिप्लिन में लोगों को रखना, कंट्रोल करना, वो काम है क्यूए का। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स की। तो क्वालिटी कंट्रोल लैब शुड बी एनेबल एक्रेडिटेड और जीएलपी अप्रूव्ड एंड अप्रूव्ड बाय द आयुष एंड सीडीएसयू। एनेबल एक्रेडिटेशन आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज कई जगह रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी जो टेस्टिंग हो रही है वो एनेबल एक्रेडिटेड लैब में होनी चाहिए। और एक्रेडिटेशन से ये होता है कि आपका सिस्टम प्रॉपर वे में एक यूनिफॉर्मिटी तरीके से चलती है, और एक सिस्टमेटिक वे, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ये सब चीजें आपको प्रॉपर वे में चलता है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है इस सब चीजों के लिए। और आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष भी आपको लैब को अप्रूव करता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ आयुष ड्रग। जो लैब की कंपोनेंट्स हैं, फाइटोकेमिस्ट्री लैब, फार्माकोनोसी, माइक्रोबायोलॉजी लैब। फार्माकोनोसी सेक्शन में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की हम बात करेंगे, जो लैब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, ये लिस्ट वहां पर दी गई है जो आपको उसमें चाहिए। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, डॉक्टर अंतरिक्ष कटारा विल गो इन द डिटेल फॉर ऑल दिस थिंग्स। फाइटोकेमिस्ट्री में ये सारी अल्कोहल डिटर्मिनेशन, वोलेटाइल बॉइलिंग पॉइंट एपरेटर्स, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें जो हैं, और टैबलेट डिसेंट्री एपरेटर्स, मॉइस्चर मीटर, मफल फर्नेस, ये सब चीजें जो हैं आनी होती हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर, वाटर बाथ, टेम्परेचर कंट्रोल, हीटिंग मेटल के लिए सीव साइजेस, डिफरेंट साइज के, सेंट्रीफ्यूज, पीएच मीटर। इसमें देखिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट उसमें कि अल्टरनेटिव यूनिट कैन गेट टेस्टिंग डन फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी। जो चीजें हम अपने यहाँ नहीं कर सकते, छोटी यूनिट है वो अपने यहाँ लैब एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती, प्रॉपर वे में टेस्ट नहीं कर सकती, तो किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी से वो टेस्टिंग वहां करा सकती है। पर वो क्या होता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। एक लैब आपको आज की तारीख में बहुत नेसेसिटी है। अब रॉ मटेरियल आपका आया, आपने दूसरे लैब में दिया, इट विल टेक 8 to 10 days, आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। इन प्रोसेस टेस्टिंग क्या कहाँ से कराएंगे, फिर फिनिश गुड्स के आप कब तक वेट करेंगे, आपने सैंपल भेजा, वो टेस्ट करके देगा, फिर आप रिपोर्ट्स उसको देखने के बाद उसके बाद आप उसको इश्यू करेंगे। माइक्रोवेल सेक्शन का जो काम है फॉर माइक्रोवेल टेस्ट लिमिट्स, तो बैक्टीरियल काउंट, फंगल काउंट, कल्चरल एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेन्स एंड टू डिटरमाइन द एंटी माइक्रोवेल एक्टिविटी ऑफ वेरियस जो पैरामीटर्स है टेस्टिंग के, उसमें ऐश वैल्यू, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव, मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल ऑयल्स, अल्कोहल कंटेंट, ये सब चीजें जो है टेस्टिंग में आती हैं। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एसिड वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू, ये डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बताए गए हैं। रॉ मटेरियल के लिए पहला फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रॉ फ्रेश ड्रग्स है, ऑयल्स है, हनी है, मिल्क है, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर से इनकी टेस्टिंग पहले देखी जाती है। अगर आपने अश्वगंधा का टेस्ट करना है, अगर आपको लगता है कि देखने से ही वो अश्वगंधा नहीं है, हाँ, कैरेक्टर्स तो उसका अश्वगंधा से नहीं मिलता, तो बाकी टेस्टिंग का कोई फायदा ही नहीं है। फिजियोकेमिकल में रॉ मटेरियल में माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो एंड माइक्रो। ऑयल्स में एडिल्ट्रेशन टेस्ट, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिनिश प्रोडक्ट्स में हम देखें आसोरिस्ट की हम बात करेंगे तो टोटल सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, पीएच, अल्कोहल कंटेंट। कषाय में टोटल सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ये सब मैंडेटरी टेस्टिंग है। और इन सबका जो डिस्क्रिप्शन है वो आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली दिया गया है कि किस डोजेज फॉर्म में आपको क्या क्या टेस्ट करना है और उनकी वैल्यू क्या होगी।
लॉगरिथम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एसिड वैल्यू, सल्फिफिकेशन वैल्यू, लॉस ऑन ड्राइंग, लेहम का लॉस ऑन ड्राइंग, टोटल शुगर, पीएच। गुलिका में एश, एसिड इंसॉल्युबल, लॉस ऑन ड्राइंग। भस्म की बात करें, रस क्रिया की बात करें तो लॉस ऑन ड्राइंग, एसिड इंसॉल्युबल, एश, पाउडर, फाइननेस। टैबलेट में डिस्टिंग्विशन टेस्ट, हेरेबिलिटी, हार्डनेस, थिकनेस, ऑइंटमेंट में कलर, फाइननेस, सिरप, पीएच, शुगर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आरएनडी सेक्शन की बात हो रही थी, तो आजकल क्या है कि आपके पास कोई ना कोई अप्रूवल, कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो तो बेटर है। तो डीएसआई अप्रूवल आज की तारीख में अच्छे मतलब एक मैंडेटरी मैं कहूंगा कि होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिससे कि आपको कई बेनिफिट्स मिल जाते हैं इन हाउस आरएनडी के लिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं, जैसे एचपीएलसी है, एसपीटीएलसी है, एफटीआईआर है, डबल एएस है, जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी, रोटरी वैक्यूम ऑपरेटर है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा आरएनडी के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समाप्त करता हूँ प्रेजेंटेशन को। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हिमांशु जी आपका। बहुत ही संक्षिप्त में और सभी पहलू आपने छूते हुए बिल्कुल सही बोला। मैं फिर अपने शब्द दोहराता हूँ। जिस दिन हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल की वैल्यू समझ जाएगी और लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करने लगेगी, रियली अपने आयुर्वेद की दवाइयां सुधर जाएंगी। और ये सबसे पहले तो जरूरत है मेरे हिसाब से तीनों मंडियों में, लुधियाना की मंडी में, खारी बावली में, इनसे ही शुरुआत होती है जो होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं अब डॉक्टर अंतरिक्ष कटारा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों में। प्रणाम सर। शर्मा सर को, अग्निहोत्री सर को प्रणाम। हिमांशु स्वागत है, सर को भी स्वागत है। प्रणाम। सर स्लाइड विजिबल है? क्लियर क्लियर गुरु। यस सर, सर जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित किया और मुझे लेबोरेटरी सेटअप और मैनेजमेंट फॉर क्यूए रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर बोलने का मौका दिया। तो लेबोरेटरी सेटअप के बारे में ऑलरेडी हिमांशु सर ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही की पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिससे कि हमें ये स्पेसिफिकली जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि उसका बेनिफिट है और जो गाइडेंस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द आयुष इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई और बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। अकॉर्डिंगली मैं इस पार्ट पे भी कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें कि लेबोरेटरी सेटअप इन इन पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पार्ट ऑफ गाइडलाइन, इन पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और उनकी जो बेसिक उनका कहाँ बेनिफिट है और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें है डिस्कशन। So first of all, we'll start with the laboratory setup. So laboratory setup guidelines are there. So fixed guidelines, we will discuss that the Schedule L of Drug and Cosmetic Act. So accordingly, we will discuss the whole laboratory setup for different kind of products. So the different kind of products, including the modern allopathic drugs, then Ayush and herbal medicine, also the NABL related guidelines, food lab related guidelines, and the laboratory design and microbiology laboratory, and also the Eurochem guideline, international guideline for the microbiology laboratory accreditation. So all of these are basically related a fixed guideline. On the basis of their fixed guideline,
we will initiate a laboratory setup, and the laboratory setup will be initiated starting with the management part, the top management part, then the middle, then lower management, then the design, infrastructure, uh, organization setup, then the laboratory setup, a physical practical lab setup, all these things will be included. So these all guidelines like Schedule L, Schedule T of Drug and Cosmetic Act, then NABL in India, which is governed by the ISO 17025 2017 international guidelines are there. Then guidance document by FSSAI. FSSAI is governed by the FSMS Act and the Ministry of Food. So accordingly, they have also given a particular laboratory development guideline. Then ISO 7218 is there, though general laboratory practice and the design of the laboratory. And laboratory design is also entitled in ISO TC 336 and 15189 specified for the microbiology laboratory. So all these guidelines we can refer before setting up a laboratory. So starting with the setting laboratory, the setting up a laboratory and their regulatory analysis part. Especially we are looking for a laboratory for the regulatory analysis part, because not a single laboratory can be without any regulatory part. A fixed legal requirements are there for setting up a laboratory. So before setting a laboratory, we will have to identify some important points like selection, identifying building facilities, and construction if required for the various analysis. Approved layout should be there. Then developing an organizational structure and assigning responsibilities. So a particular organization structure should be there, and the responsibility should be assigned to the top, middle, and lower middle, and the uh, junior level of the manpower. Then selection of analysis to be performed. So whatever we have identified the responsibility, on the basis of the responsibility, we will select those persons who will do the analysis of the drugs, food, or Ayush medicine. Then the selection and purchase of the equipment and chemicals. Then the next part is how we will identify that what kind of equipment, chemicals are required. So accordingly, we will identify that what kind of product to be tested in the laboratory. If if we want to test a drug, so we'll have to identify the requirement as per the Schedule L and the Drug and Cosmetic Act, the basic rules and regulation for the setting up a laboratory, and get approval by the drug department and also from the Ayush department. So we will have to refer all the basic guidelines accordingly for identification of a product. Then if we want to analyze the Ayush product, then we'll have to refer the Schedule T guidelines for the same. Then further, if we want to analyze the food product, then for the food product, the basic requirement as per the FSSAI will have to follow. And also as per the FSMS Act, we'll have to follow. Then next part is the appointment and maintaining qualified analyst, technician, skilled and unskilled staff. So overall organization structure will be identified a qualified manpower only, a trained manpower. So accordingly, we'll have to, the next part will be the appointment of the qualified technicians, skilled and unskilled staff is required. Then establish the standard operational and working procedure. As Himanshu sir already said that SOP is the mandatory part. And if we have the SOP, our routine analysis and our development, validations, all over things will be synchronized throughout the day-to-day analysis. So in that part, standard operating procedures are required. And these standard operating procedures is required for the equipment handling, testing of products, and also to handle the laboratory operation management. So laboratory operation management
in this part, we consider the quality assurance part for the analysis, and then establish a quality assurance program such as ISO 17025:2017. Then NABL is following ISO 17025:2017. It is a basic requirement and international requirement in which we will have to assure the quality assurance program should be as per ISO international guidelines. So it is it has been already discussed by Himanshu sir regarding the Ayush lab structure. Already it is mentioned that minimum area is required 800 square feet for the Ayush lab. It is minimum area. It is not restricted to do that 800. If we have more area, so it is better to build your lab in a bigger area, because whenever your production will increase, your testing requirement will also increase, and in that case, it is necessary to have an area more than 2,000 or 3,000 square feet for a good laboratory. Or right now, the Multani is having a laboratory more than 9,000 square feet. So it is a basic requirement, and it is completely depend upon the segregation and departments and type of products that you want to test in the laboratory. So in this chemistry, pharmacognosy, Ayurveda, Siddha, Unani, microbiology, sample room, office cum record room is the basic requirement as per the Act. So in the next part, we will discuss the department for the testing laboratory. So as we have already discussed, the drug, Ayush and food requirements are there. So whenever we will have to set up a laboratory, so basic layout is very much important. So accordingly, the basic layout, this is the sample receipt and registration room is there. So it should be there before analyzing any sample. The sample should be properly booked, because there should be a report generation process after the analysis, and the report generation should be well aligned with the detailed information of the production or any customer, because the third party laboratory is also concerned. So any customer, if it is there, so a perfect booking requirement of booking information should be there on the report, because if your sample of your tested sample cannot be traced throughout the batch number, throughout the name, throughout the batch size, or any specific requirement, then the report is not of any use, and it do not have any value. So a sample receipt registration requirement, sample storage room is required at a particular temperature. It should be there. Then primary processing and subsampling area, it is required. Then accordingly, the requirement of the test, different rooms and different specialized rooms are required. Such kind, if we want to analyze the pesticide residue, mycotoxin, aflatoxin analysis, so there should be a separate LCMS and GCMS room is required. Then if we want to analyze the ICP-MS mineral and metal spectroscopic requirements, in that case, we will have to have this heavy metal laboratory. It should be separated. Then for the analysis of volumetric, gravimetric, etching analysis, it is required a separate chemical laboratory. Then nutritional analysis is required. If we are setting a food, then nutrition evaluation lab is required. And all of these labs will be separated out. A complete separation is there for the microbiology lab. A separate microbiology lab is required with the media preparation, sample preparation, inoculation, incubation, decontamination process. So I will also discuss the layout of the laboratory, what kind of layout is required for setting up a laboratory. So these are the basic infrastructure requirement for setting up a laboratory. It is completely depend upon the type of product that you want to test in your laboratory. So the next part is the laboratory organization. So the kind of organization and the setup of manpower it is required in the laboratory. So it is required the head of and
director of the laboratory, it should be there for proper statutory and legal requirement as per the Company Act or any proprietorship act. The laboratory should be registered well. Then analytical staff is there, administrative staff is there, and the support staff is required. So whenever we will discuss the organization chart, then the organization can be like that. Then managing a director, CEO of the laboratory, then director and head of the laboratory, then different departments should be separated accordingly. If the technical lead is required, so different technical leads are there. Then technical lead for pesticide, technical lead for heavy metal or instrumentation lab, proper head of the instrumentation lab is there. Then technical lead for the chemical testing, and also if we are considering Ayush, there should be a head for the Ayurveda Siddha Unani expert is required. Then in that case, there should also be a pharmacognosy expert is required to basic identification of the raw material and drugs. Then technical lead for the chemical lab, then technical lead for the microbiology lab is also required. There senior analyst, junior analyst, and a complete team is there. And accordingly, a CRM, that means customer relationship managers are required. A team is required for handling of the samples from the market and also coming to the laboratory, handling of the sample and processing it up to the technical lead or the technical manager. So a complete setup and complete organization setup and manpower setup is required for that process. And also the support facilities as we concern a kind of registration, plumbing, security, maintenance, housekeeping, estate management, and these all are required in the laboratory, and also the maintenance manager is required. So next part is the chemical and instrument lab layout. So we can see on the screen, there should be a laboratory. Laboratory is well ventilated, and it should be well identified. Area should be well identified with all the utilities, and also it should be avoided. The layout should avoid any kind of contamination between the chemical instrument and microbiology lab. Because if the cross contamination are there, so your results will be affected. And if your results will be affected, the integrity will be challenged. So we cannot compromise with the integrity of the laboratory. That's why the layout should be well managed. We can see that if we are entering in the laboratory, there should be a proper entry room, a cross table should be there, change rooms are required. Then after the change rooms, we can enter in a CRM section like customer relationship management part is there, in which the sample booking will be happen. Then the separated area is required for the chemical and gravimetric analysis that we can say is a part of nutritional lab is required separately. Then instrumentation, a common instrumentation laboratory is required for setting up all the equipments which is required for the basic quality control of the Ayush drug and food. Then there should be a mandatory requirement. Then ICP-MS, GC-MS-MS, LC-MS-MS. They should be having a separate laboratory with a separate entry and exit part. Then microbiology laboratory is also required. Microbiology laboratory should be designed as per the basic requirement of the ISO guidelines. So it should be designed accordingly, the basic requirement of AYUSH guidelines. And also, if we want to handle the fuming chemicals and life-challenging chemicals and carcinogenic chemicals, so there should be a separate area with for the it should contain with a fume hood. A proper ventilation is required. A digester, soft extraction, sink, freezer, all these things are required
because a laboratory is also some part of the laboratory is also life challenging. In that case, a proper safety parameters are required before setting up a laboratory. So accordingly, I have discussed related to chemical and instrumentation laboratory. These are some snapshot of the laboratory working and the kind of environment that we require in the laboratory. So you can see that it is a liquid chromatography section. So LC-MS section, the type of equipments and the persons are working in the laboratory. It should be well managed and organized. Then we can see this gas chromatography section, and GC related part is there. So GC-MS GC-FIT with headspace is installed in the laboratory, and kind of arrangement is required with continuous support of light and electricity, and also lower temperature is required to handle these kind of equipment, because these are very sophisticated equipments uh, required to analyze the special kind of test in the laboratory. So all of these things are required. Then it is a ICP-MS testing area that you can see the ICP-MS is installed with the LC system. So all of the mineral and metal analysis will be performed over there. So these are the different equipments which is used in the laboratory, in chemical testing laboratory, like polarimeter, automatic polarimeter, water activity meter, COC analyzer is required, then automated potentiometer, and water purification system is also required in the laboratory, because whatever the water we are using for the analysis, it should be uh, uh, TDS free water. It should be TDS free. Zero TDS water is required. So the sample preparation technique is also required. So separate area for the sample preparation is required, in which the rotary evaporator, nitrogen evaporator, centrifuge, and vortex mixing is required. Then chemical testing laboratory, a separate, I have already discussed, a separate chemical testing laboratory is required, and it should be fitted with the proper safety gadgets, and also the basic requirement of the ISO, and should be well separated, and whatever the benches is concerned, it should be separated at least 5 to 6 feet distances should be there, because any kind of testing if we are performing, there should not be entangled in between the manpowers, and also there should not be a part of, in case of any emergency, there should be a proper evacuation is required in the laboratory. And fume extractor, you can see the few fume extractors are there. So if any kind of fume, acid and chemical fume is there, it should be extracted directly. It should not affect the analyst health. Then chemical testing laboratory, these are some other equipments are also required in the laboratory, like fat extraction, protein extraction, parameters, and pH meters. You can see then mm, microwave digestion system is required. So next, I will discuss the basic testing equipments which is required in the laboratory. We can see the moisture content by oven drying method, and ash value by furnace etching method, then extractive values by gravimetric processes, and refractive index by refractometer, optical rotation by the polarimeter, and then viscosity by rotational viscometer, powder flow characteristics by Karp's index method, and powder size by the sieve method. So all of these techniques are required in the laboratory. Then if the identification of the phytocompounds and chemicals like alkaloids, flavonoids, glycosides, and tannins, so we'll have to perform the chemical test, and titration is the next part for the reducing sugar and peroxide value and acid value saponification if it is required. Then UV visible spectrophotometer, HPTLC fingerprint system, quantitative analysis of biomarkers using HPLC technique. So HPLC is there. We can see a complete HPLC system is required for the quantitative estimation of the biomarkers in the drug, AYUSH, and the food system. Then already we have discussed the ICP-MS, AAS setup is required. Then LCMS, some
radioactive contamination can be analyzed by the scintillation detectors that we have. And for pesticide residue analysis, GCMS, GCFID headspace systems are required in the laboratory. The next part is the microbiology laboratory. As we all know, the microbiology testing is also important requirement as per the regulatory concern also, and as per the market requirement and market sustainability of your product. Microbiology testing is also required. So the microbiology lab should be completely separated with the chemical and instrumentation lab, and it should be well designed in a process that there should not be any cross contamination within the microbiology lab, because we are handling some cultures, pure cultures of pure pathogenic bacteria and funguses, and also we are handling our product. So in that case, if there is a contamination in between the product, so we cannot identify or analyze a actual load or actual microbial load of the product in that case. So there should be a well designed lab. A separate air handling unit should be installed in case of entries, exits, and also a separate area for the microbial limit testing, culture handling, and other incubation and media preparation room. So in which we'll have to enter with the crossover benches. So 3 airlock system is required for entering in the laboratory, and manpower and material entry should be separated, completely separated. A media preparation room is there, and a dynamic pass boxes should be fitted in all the laboratory just to ensure there should not be any cross contamination within the room. So dynamic pass boxes are required, air handling units are required, separate rooms are required. So all of these should be well controlled in the microbiology laboratory to ensure good laboratory practices in the laboratory. So this is the layout of the laboratory, microbiology laboratory. Then the next part is techniques in the microbiology laboratory. So laminar airflow, biosafety cabinet, double door autoclave, dynamics and static pass boxes, and 3 or more than 3 AHU systems are required. So you can see the images of the microbiology laboratory. Here it is double door autoclave system is there. Then clean rooms are there for working in the microbiology laboratory. These are the tests that we perform in the microbiology laboratory: enumeration of total fungal, total bacterial, and detection of the pathogens as we concern as per the regulatory requirements. Some in vivo, in vitro requirements also can be performed in the setup of the microbiology laboratory. Acute, chronic, and toxicity study can also be performed in this kind of setup. Then microbiology testing, and we can discuss the microbiology testing, and these are the techniques that we use in the microbiology analysis. These are the RT-PCR system is there. Then for the storage of this, the incubators are there. Freeze drying method is there. These you can see the differentiation of area with the complete airlock systems are there in the laboratory, and laminar airflow, microscope working, and this incubator taking apparatus are required in the laboratory. So overall, we have discussed the organization, setup, infrastructure, and layout of the laboratory. Then the next part is the problems in the laboratory setup. So what kind of problems that we face during the laboratory, and what are the challenges during the setup of the laboratory. So first of all, the lack of knowledge is there. So whenever organization, any management is planning for setting up a laboratory, they should have well versed with the basic guidelines of the laboratory, and there should be a consultant who's having a proper experience while working in the laboratory. So a perfect team should be associated before setting up a laboratory. So lack of knowledge is the main issue. Then costing and capital expenditure. Definitely, if we want to set up a complete laboratory with full furnished requirement, it will take 5 to 10 crore rupees for
current requirement. If we want to set up a basic laboratory, a basic quality control laboratory for the Ayush product, definitely it will take around 25 lakh rupees, mm, for with including all the infrastructure and instrumentation requirements. But it is better to invest in the laboratory for a long run purpose and for a good quality equipment purpose, because once we mm, once we invest our money on a good quality equipment, then the reliability and the integrity of the result generation will be on the higher side. And if it is on the higher side, then the quality of the product will also be on a good side. So we'll have to consider the quality perspective before investing in the laboratory. Then the area specification. So area specification is also very much important, as I have already said that the area, if the manufacturing unit or any laboratory is having an area constraint, so there will be an issue, because mm, whenever we consider the laboratory requirement, there should be a perfect area is required, like 800 as per the act requirement, there should be 800 square feet, but 800 square feet is not a basic uh, part in which we can set or run a laboratory. For starting with 2,000 to 3,000 square feet, and more than that area is required. So area specification is also very much important. Then separate area, segregation of the different type of products. If we want to analyze the food, drug and Ayush, so we should have all the separated area in the laboratory. We cannot analyze any kind of drug in a same room, and Ayush medicine and food in the same room. So if we want to set up a big laboratory with having the big scope for the analysis, all these um, products will have to set up in a separate rooms and separate environment. Then the competent manpower is also a challenge to set up a laboratory, because if we want to set up a laboratory, a proper trained, experienced staff is required to set up a laboratory, because it is a specialized act that we want to perform on the testing of the drug or any kind of product. So whenever it is the case of the specialized act or specialized working, so we'll have to have a person, a competent person, trained or well organized person. So next is the sophisticated equipment is also a challenge, because right now the equipments are having their cost is more than 50 lakhs, 1 crore or 2 crore rupees are there. So if you want to analyze the sophisticated part of the analysis, like toxic elements or toxic organic products or inorganic products, we'll have to have these sophisticated equipment. In that part, the costing is the major fact, and availability of reference material. Reference material is also very much important. Right now, mm, more and more agencies are there to provide the reference material, but there should always be a challenge to get a well certified reference material. And accreditation and certification. Accreditation and certification is also a challenge, because if you want to analyze for the regulatory purpose, for the inland purpose, so we'll have to go for the different kind of accreditation certification. And if we are going for the export purpose, then the accreditation certification are different. So all of these are the problems. Then we will discuss about the laboratory certification and accreditation. So laboratory certification and accreditations are there, in which we will discuss about the Ayush drug testing laboratory. The Ayush testing laboratory is the basic requirement as per the Drug and Cosmetic Act. Then drug testing laboratory, it is also mentioned in the Drug and Cosmetic Act uh, for the drug testing laboratory. Then the accreditation of the NABL or ISO 17025 2017.
This is the quality management system for the testing and calibration laboratory. So ISO 17025 is the international guideline which follows by the NABL and implemented throughout the India and throughout the seeking laboratory. Then FSSAI is required for the food testing laboratory. Then Bureau of Indian Standard is required for specialized testing related to the standards of the BIS. Then EIC, Export Inspection Council testing is required, in which case related to specialized commodities like rice, cereals, and any other fruit and vegetable commodities as concerned, for which a manufacturer is seeking for the export from outside India to the outside India. In that case, the EIC approval is required. Then EPIDA and MPIDA approval or certifications are required. In this, the Agriculture Produce Export Development Authority and Marine Produce Export Development Authorities are there. And AGMARC is also there, in which a specialized certification and grading is there for the food products, spices, oil, and some sugars and cereal products are there. So AGMARC certification is also required for the laboratory. Then the basic quality management system requirement like ISO 9001 is required. And also the safety management system like ISO 18001 OSA system is also required in case of the laboratory. The safety management is also a part of the laboratory. So this is the overall organization setup, layout, and the basic issues that we consider during the laboratory management. So thank you, sir, for providing me this opportunity. Great, great, excellent, very much in detail, but beautiful. Thank you, sir. बहुत अच्छा अंतरिक्ष जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। कानून से लेके और जरूरतें दोनों ही आपने कवर की। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बहुत आभार। अपना अगला विषय क्या होना चाहिए जरूर मुझे बताएं, एक बार लिख के भेज दें। मैंने तो अपने प्रोग्राम में डाला ही है, लेकिन फिर भी एक बार क्या और सुटेबल आपकी तरफ से मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी कुछ हमारे जो है जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी डिस्कस किया था। अभी आयुष मेडिसिन में ना हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर माइक्रोबायोलॉजी का जो पार्ट है, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी जो लिमिट्स है ना उनमें सबसे ज्यादा आयुष मेडिसिन फेल होती है। So I think a good microbiology practices for आयुष मेडिसिन और स्पीकर हैं अपने पे। हाँ स्पीकर्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर, पॉसिबली अरेंज हो जाएंगे तो मैं आपको उनको मैं अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक वही रखते हैं फिर अपन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं अब सगीर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर सगीर सर आप म्यूट हैं। हेलो, ऑडिबल सर? यस, ओके सर, ओके सर। मेरी पीपीटी चलाएंगे सर क्या? हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Welcome everybody. The topic of today is laboratory setup management and presented by Dr. Sagiram. Today we discuss on the topic of a good laboratory setup is an essential element of quality assurance program. Use of the adequate working space is necessary for each and hassle-free movement for the lab personnel. Basically, the lab setup under the guidelines given by the AYUSH as well as other agencies through the DNC Act. According this, premises should be, it is the place where
material of plant origin, mineral origin, and animal origin as was given by AYUSH. The specimens are collected, stored, processed, analyzed, and reported for the purpose of the screening diagnosis. Next, please, sir. सगीर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जी पढ़े सर। नहीं, ब्रीफ बताते चले। ओके सर। लेबोरेटरी सेटअप का एक ये है कि सर, इट इज वेरी वेरी इसेंशियल if we want to develop the laboratory, each and everything should be clear and transparent and safety point of view of the employee who is working in laboratories. सर, लेबोरेटरीज में काम करने वालों के लिए सबसे पहले हर चीज, एवरीथिंग शुड बी safety is essential parameters and guidelines should be followed. Through the ISO, it should be clear and report which we are going to generate should be clear. Each and every point as given by the AYUSH, UPI, API and IP. According these, we should clear. Next, please, sir. Although expensive, their use reduce loss of the contamination, media and employee time and efforts. That is the very very essential topic of these. Time should be maintained, cost should be used, and maybe safety of each and every persons. Sir, certification is essential if you are going to export the material और FG फिनिश गुड अगर हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। इसके अलावा आईएसओ भी बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ये सब गाइडलाइन के तहत जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया है उसी के अकॉर्डिंग सारी लेबोरेटरी होनी चाहिए, जिससे हम लोग इजिली वर्क कर सके ताकि लेबोरेटरी में कोई हैपनिंग ना हो। और डिस्पोजल सिस्टम इज वेरी वेरी इसेंशियल इन बायोलॉजी। जो एयरबोर्न डिजीज है उनको रोकने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए, वो सभी चीजें उसमें मुख्तलिफ होनी चाहिए जिससे कि हम लोग सेफ रह सके। सारी चीजें सेफ्टी एंड जनरेट द डेटा एक्चुअली वी रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्या क्या चीजें जरूर हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके ऑडिट होती हैं उसमें भी हमें सारी चीजें का लाभ मिलता है जो कि हम लोग सर्टिफिकेशन के थ्रू उनको अवेल करते हैं। सारी चीजें ऑथेंटिसिटी तभी आती है कि लैब में क्या क्या होना चाहिए। जैसे क्यूसी डिपार्टमेंट है, उसमें दे आर सो मेनी लैब्स, वेट लैब इज देयर जहाँ पे इक्विपमेंट्स की क्या क्या जरूरत है वो उनको कैलिब्रेशन की कैसे होना चाहिए, टाइम पे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें जो क्रोमेटोग्राफीज हैं, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, डिमांड ऑफ टुडे। उनको करने के लिए सर हमें हर चीज का पैरामीटर लेना है, हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी लेबोरेटरी सेफ्टी मैनेजमेंट को हम कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आएंगी उनको हैंडल करने में बहुत मुश्किलात आएंगी ताकि हम लोग उसको डेवलप कर सकें। स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इसेंशियल। स्टैंडर्ड के तहत ही हम लोग कंपेटिटिव स्टडी कर सकते हैं और उसमें अपने आप को प्रूव कर सकते हैं दैट द मटेरियल व्हिच वाज गोइंग टू टेस्टिंग इज ओके एंड नॉट। उसके लिए हमको सब चीज अपने साइंटिस्ट भी डेवलप करने होंगे, साइंटिस्टों को ट्रेनिंग भी जरूरी होनी चाहिए और लैब का सेटअप के लिए सारी चीजें मुकम्मल हो एज पर गाइडलाइन गिवन बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज वेल एज मेट्रोलॉजी, जिसके तहत हम लोग अपने आप को पूरा कर सके। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं उनको एसओपी के तहत हमें इंश्योर दैट एयर ट्रेनिंग ऑन एसओपीज, हर चीज के एसओपी फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। एसओपी ही एक ऐसी चीज है जो हर एक इंस्ट्रूमेंट के पास लगी होनी चाहिए ताकि हम लोग इजिली उसको रीड कर सके, इजिली उसको पढ़ सके, इजिली उसको हैंडल कर सके और एक साइंटिस्ट के जानने के बाद दूसरे साइंटिस्ट को ऐसा करना चाहिए ताकि वो उसको इजिली हैंडल कर सके और जनरेट द रिपोर्ट्स। लेबोरेटरी सेटअप मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। ईच एंड एवरी पर्सन
there are two person, one is scientist and other is non scientist person. नॉन साइंटिस्ट पर्सन भी उसी उतना ही इसेंशियल है उसकी सेफ्टी जितने की एक साइंटिस्ट की, ताकि उसमें कोई हैपनिंग ना हो और हम सब उसको केयरफुली उसकी हिफाजत कर सके और उसको वही पैरामीटर यूज करें, वही सेफ्टी यूज करें जो एक साइंटिस्ट के लिए होती है, ताकि मूवमेंट इजीली हो सके, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके लैब में, बेस अच्छा बना रहे, इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा हो सके. देयर आर सो अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन रीड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको गिनते गिनते भी काफी टाइम हो जाएगा. इसलिए सर ने कहा कि वेरी शॉर्टली आप इसको एक्सप्लेन करें, और उसके साथ साथ हम ट्रेनिंग का भी इसमें रखें कि 15 डेज में हम ट्रेनिंग कराएं अपने स्टूडेंट्स, अपने साइंटिस्टों को, और नॉन टेक्निकल पर्सन ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग द पर्सन हु इज वर्किंग इन द लैब need to develop all the skills, जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक में एक्ट में दिया गया है, ताकि उसको पढ़कर उसको आगे बढ़ सके, और सारी चीजें की हैपनिंग ना हो सर. और बीच बीच में इंस्ट्रूमेंट को बिफोर हैंडल, बिफोर द स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्लासवेयर शुड बी नीट एंड क्लीन. उसका बहुत कंटामिनेशन को रोकने के लिए वेरी वेरी इसेंशियल कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वो गाइडलाइंस के तहत ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, कैसे सैंपल लेना है, वो लैब की ट्रेनिंग के थ्रू ही हम उसको बता सकते हैं सर. और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं सर, जो आदमी की हेल्थ को सेफ रख सके, उसको प्रॉपर गाइड कर सके, उसको प्रॉपर जो इंटरनेशनल जर्नल्स है वो डेवलप हो सके, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल्स, एज वेल एज मेंटेन द डेटा ऑफ द एफजी. और लैब के जितने भी चीजें हैं उनको करने के लिए हम कुछ गाइडलाइन है जो इसमें दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर सकें सर. बायोमेडिकल वेस्टेज इज इसेंशियल. सबसे बड़ी बात है कि डिस्पोजल का क्या होना चाहिए. डिस्पोजल इज वेरी वेरी इसेंशियल. उसी को डिस्पोज करने के लिए एक अलग गाइडलाइन हो, ताकि हम लोग उसको डिस्पोज कर सके और सेफ रह सके. प्रैक्टिकल को फिनिश करने के बाद हाइजीन कंडीशन इज रिक्वायर्ड. जो 4 चीजें हैं कि हाइजीन कंडीशन में क्या क्या, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनको कैसे हैंडल करें, उनको रखने की क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, अकॉर्डिंग द गाइडलाइन गिवन बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको रखना चाहिए सर. इन्हीं के बातों को रखते हुए सर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच मुझको स्पेस था एक्सप्लेन करने का सर. और सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे शॉर्ट पीरियड में मुझे कहा कि तुम थोड़े 2 लफ्जों का इस्तेमाल करो. डोंट वरी. थैंक यू वेरी मच सर. मैं क्या करूं कि आपको परेशान करता रहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, नहीं लेकिन नहीं आप सर, मैं लोगों के चाहता हूँ बिना सर, एक्चुअली मेरा मुझे नैनीताल का प्रोग्राम है सर, अभी मैं अभी उसी की तैयारी कर रहा था सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. या आदरणीय अग्निहोत्री सर. जी बहुत बहुत धन्यवाद सगीर साहब आपका भी, कटार साहब आपका भी, और थैंक यू सर. आदरणीय तिवारी जी आपका भी. देखिए एक प्रोग्राम रखा हम लोगों ने लैब के और क्वालिटी कंट्रोल के मामले में क्या कुछ सहायता हुई है, उसमें आपके आज के अतिथि वक्ताओं ने बहुत ही गहराई से और बहुत ही डिटेल से विस्तृत रूप से बताया. अगर कोई फर्म या कोई व्यक्ति अपने लेवल से भी अगर ये एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है, उसको भी बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें मिली है, और कितना आगे तक जाना है वो भी वहीं पर शामिल हो गया. रही बात जैसे प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने कहा कि वो हमारी मंडियों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, कि पहले तो औषधि